A very good evening to all of you. I welcome you all to today's session. The chairperson of today's session is Professor A. Ramamurthy Sir, Registrar, NI Jaipur. He will be joining us soon. The topic of today's session is brief information on the traditional drug discovery process and latest trends in the drug discovery process. The speaker of today's session is Dr. Sudipt Rath Sir, Associate Professor, Dravyagna Department, NI Jaipur. He is also Dean Interdisciplinary Studies. He is in charge of Drug Discovery and Development Unit, Coordinator of Pharmacovigilance, and he has 85 research papers to his credit. I now request Sir to kindly deliver his talk. Sir, please. Thank you, Dr. Rasmi. Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. You are audible. Thank you. So, this is my second class, so I don't think if I still need introduction in the second class, then there is a problem with me. So, thank you very much. And I'm also extremely apologetic for delaying this session. I had other appointments and other engagements. So, thank you very much. So today, as we were discussing, and as per the schedule, I have to discuss a topic titled drug discovery process, both traditional method and also the conventional or the contemporary method that we are following nowadays. So, but in the last class, we also had during the interaction, there was a feedback that only Rus was covered, and Guna, Birya, Vipak, etc. As a part of Dravya Pariksha in the research context was not discussed. So I will try that I will mix both, that Guna is covered and also the drug discovery process is covered. That's how I am going to deliver the lecture. Let me share the screen. Someone just please confirm whether the slides are moving or not. Sir. रश्मि जी स्लाइड मूव कर रही है ना? Yes, sir. Okay. So today we'll be discussing about the drug discovery process, and 1 minute. This is भीषजां साधुवृत्तानां भद्रम आगमशालिनम् अभ्यस्त कर्मणां भद्रम भद्रम भद्राभिलाषिणम्. As I had told you that the drug discovery process is the central theme of discussion today. Then the question comes that whether what we have inherited or we are learning as the knowledge system of Ayurveda, whether it is complete or still incomplete, and whether we still need to add something to this knowledge that we have already inherited. That question always remains in the mind of a Ayurvedic person, whether we can add something to the already existing knowledge. Then to explain this, whether we can add something, whether Ayurveda is complete or is still waiting for some additional information to be incorporated. I have just taken the example of the lords of Puri Dham, Jagannath, Balbhadra, Subhadra. Many of you might be knowing, and many of you might not be knowing that these lords, they don't have the limbs. There are no palms for them, or there are no feet for them. So incompleteness is basically the reality of every sort of life. That's how the lords lords of Puri have been picturized. It's not that they could have not have painted or made one kind of palm or feet, but they just wanted to convey the message that even the creator of the universe remains incomplete in one sense or the other. So incompleteness is reality. So if we extend the same phenomena
or the same logic to Ayurveda, then we must first acknowledge and we must first accept that whatever we have inherited or we have in our hand as the Ayurvedic system of knowledge is in some way or other is incomplete, and it still needs to be supplemented or enhanced or enriched in some way or other. And how that incompleteness can be a completeness, that also the same temple gives an example. 12 times in a year, 12 times in a year, these lords, they adorn some golden ornaments to achieve some sort of physical completeness when they will wear the palm and the feet and all other things. So that means you need some kind of help from other sources to achieve the completeness. Why I am highlighting this? Because in the contemporary context where we are operating, we may require the knowledge and the skills of other streams of sciences to enrich or to move our system of knowledge towards completeness. So it is uh, kind of arrogance, and you can say also kind of foolishness, if we think that we can achieve completeness only from within. We need some support also from outside. Why? Because here the creator of the universe, the lords, also they need some human help to achieve physical completeness. Similarly, for enriching or for moving towards Ayurvedic knowledge to completeness, we may need help in form of knowledge and skills from other associated contemporary science. There is no problem in that. Why I am highlighting? Because these type of questions do come before all of us. Whether I need to study modern biochemistry, I need to study modern physiology, other I need to study modern pharmacology. All these things we do question, and we face this question, and everybody answers it in a different way. But at the end of the day, I feel if something can help us to improve our knowledge, then that is welcome. And that also I will discuss you in the later stages of the presentation, how the texts, Ayurvedic texts also has accepted that you can take help of other texts. Now, this is a Pythagorean theorem. What it is? It's a formula. Why this formula has been used? This formula was used to solve many difficult and intriguing problems. So similarly, we are dealing with problems day in and day out. Our problem is a clinical problem. Ultimately, we all are Ayurvedic physicians who are trying to solve some health related problems that comes before us. So when we are trying to solve a problem, then we will need a formula. We will need a formula. So without a formula, many times we may not solve the problem. Then you see, this is this Einstein's theory of relativity. Many complex problems were solved by using a formula. And how the formula was evolved, you see, when Einstein discovered E is equal to mc square, he was presented, I mean, I have given a pictorial representation that how he might have seen the problems. And seeing all these problems, he just came to a conclusion that energy is equal to mc square. So that means a formula, what is given in our text, what we call a sutra, what we call a Chikitsa Siddhanta or Chikitsa Sutra, is nothing but an output of extremely intellect sect who have observed the problems and tried to present it in a very simplified manner, so that the future generation can use that formula to solve the clinical problem. So my point is that because we say yoga or formulation, what it is a formula, and it is a tool which gives a solution to a definite problem. And we all, as Ayurvedic physicians, whether we are in the field of research or whether we are in the field of clinical practice or even in the field of teaching and training, we are trying to solve a clinical problem either in the classroom or in the IPD or OPD. So we need a formula
which can actually solve that clinical problem. And designing of that formula always helps to solve many future problems also, because many times we come across a clinical problem which is very unique and we need to solve it then and there. But while solving it, if we document it, then there is a possibility that some of our fraternity may come across the same problem. Then that time that person doesn't have to rack his brain to evolve or design a formula to solve the problem, but he just can borrow our formula and implement it to get the results. And how the designing can happen, designing, I think I also touched upon this point, that whatever research you are doing, the most fundamental and the important aspect of the research is that you must have observational skills. If you can't observe something happening, then you can do a research. This is the basic fundamental requirement of a researcher. The researcher must have the indriyas, gyanendriyas, to actually observe events or phenomena happening around him or her. Many times, many things happen around us which simply do not register it in our mind, so that we cannot actually design anything. So, even for designing something, a formula for solving a clinical problem, also we need the skill of an observer. We must do the observation keenly and unbiasedly. So, why learn Ayurveda? Why I am touching this point? Even the drug discovery process also has its Abhidhan Chatushtaya. That means you must know what you are actually trying to achieve. What is your prayojan? And to achieve that prayojan, what you must learn. So, like similarly, they have given an example in the first chapter commentary of Charak Sutra, that what is the Abhidhana Chatushtaya of Ayurveda, and the same principle extends to every aspects of Ayurvedic research and further learning. Suppose I am trying to solve a problem that I need to have a formulation which will be helpful in, say, in the contemporary terminology, diabetes mellitus, type 2 diabetes mellitus, or say Prameha. That means you are trying to, then in that Prameha you have to decide whether you are just targeting that reduction of plasma glucose level is your target, or relief in the clinical signs and symptoms of a Prameha rogi. So once you decide that, then that is the prayojan. And after that we need to know what text, what knowledge and what skills I must have to solve this problem. So in that context, to suppose I have taken a decision that I am trying to reduce the plasma glucose level of the type 2 diabetic mellitus patients, then what will be the knowledge and skills I must have in my hand to solve that problem. So that will be your avidya. Then you have to establish theoretically whether what you are going to learn and what skills you are going to acquire is actually having a relation with the provision or with the aims and objective that you are trying to achieve. Once these three are established, then we have to see whether I am good enough to do that or not. Many times we try to do things which we are not qualified or we are not trained to do that. So whether we need to acquire that training skills, or sometimes what we call as that this is not my cup of tea. That is also something we have to accept. So in a drug designing or drug discovery process, you have to apply this Abhidhan Chatushtaya principle also, that what exactly you are trying to achieve or are trying to get through this particular medicine, and to design or develop that particular medicine, what knowledge and skill sets one must have, and whether the skill set and the requirement or the aims and objectives is related or not, and finally whether the researcher is good enough or qualified enough to do that. These four first needs to be answered before actually going into drug discovery process.
then this I have just a generalized concept I am telling, that every Ayurvedic person who is I mean the stakeholders of Ayurveda, they directly or indirectly do only one thing: they try to improve the health of the person who comes before Ayurveda. That's why dhatu samya kriya cha ukta tantra asya prayojanam. That means if you are learning Ayurveda, or you are implementing Ayurveda, or you are executing Ayurveda, in one way or other, directly or indirectly, you are trying to improve the health of the person who is coming, who is approaching to you for help. Even if he is a healthy person, you are trying to maintain his health, and maintenance itself is an improvement of health, because by nature health tends to go towards sickness. Similarly, if some person is deceased, then we are trying to restore back the health of that person. So ultimately, if you combine both these things, we are trying to improve the health of the person who is coming before us. And to do that process, you are the most important person who is going to do that thing. So that's why you are known as the Karan, the Ayurvedic physician or Ayurvedic researcher who is trying to do that. He is the Karan, and Karan is always responsible for the Karya. So, without the presence of an Ayurvedic knowledge owner, it is very difficult to find a solution in the field of Ayurveda. That's why we are promoting that you cannot market Ayurvedic medicine without an Ayurvedic physician. And then the Ayurvedic physician, he or she needs some tool to do it, his or her work. And what is that tool? The most important tool is that that is what named as Karanam Punar Bheshaja. Means he needs a Bhesaj to achieve his or her target. If without Bheshaja, the Karana, that is the Bhishak, is incomplete. So, if we add everything as we are discussing, the clinical problem is a problem that is before us. And what is the formula to solve that clinical problem? We are going to solve the problem, but Bhesaj is the formula through which we are going to solve this problem. So, Bhesaj is the formula which is going to solve the problem, and we as Ayurvedic physician are going to solve the problem with the help of the Vesas. And that already the texts have told that yat tu kartradhina vyapare sadhakatamam tatkaranam, means it is the most important tool. The medicine or the medicinal regimen that you have, it is the most important tool that we have in our hand to solve the clinical problem that is facing us. And we have three types of treatment modalities available before us. That is, one is Daiva Vipasraya, one is your Sattva, and third one is Yukti Vipasraya. But if you study Ayurveda critically, you see most importance has been given to the Yukti Vipasraya Chikitsa, and Daiva Vipasraya and Sattva Chikitsa is always a part of this regimen alongside the Yukti Vipasraya Chikitsa. If you study Chakrapani Tika, he says that in every patient you have to apply all the three types of chikitsa. You have to do certain amount of Daivapasraya also. You need some kind of divine help to help a person to improve his health. You also need some kind of psychological counseling, what you call as Sattva Chikitsa, along with the drug-based Yukti Vipasraya Chikitsa, that is rationalized use of medicine. So all the three modalities is actually used in every patient. And depending upon the clinical problem, one may go get more importance and another may go into secondary thing. But we cannot visualize any clinical condition where all the three modalities will not be used. And that Yukti Vipas, what Dr. Hemendra Kumar Verma is trying to say. Okay. And when we're talking of rationalized drug-based treatment, then it also has two
components. One is Dravyabhutam and another is Adravyabhutam. In Adravyabhutam Chikitsa, like we say someone to go for a fasting, or say someone to just sit in the, expose yourself to the sun. These are called Adravyabhut Chikitsa, whereas in Dravyabhut Chikitsa, we will be using the drug-based medicinal substances. So, what is drug discovery process? This is the first question that we will be asking in today's presentation. What is discovery? Whether drug is a bheshaj or is a aushad, is a medicine, what it is. If you see our text, uh, drug discovery, drug, we don't consider only as a single medicine. We say chikischitam vyadhiharam pathyam sadhanam aushadam prayaschitam prasamanam prakriti sthapanam hitam vidyat bhesaja namani. What it means that the entire regimen, therapeutic regimen that you are going to administer for a patient becomes the drug or becomes the bhesaj or become the aushad. Being a holistic system of medicine, we do not conceptualize single drug discovery thing. Why? Because we know that when a person comes or a patient comes to us, then we have to deliver the health to that person, and whatever it is required, we have to do that. We cannot say that I have this drug and I cannot go beyond that. So, in our context, drug discovery is that you have to give the regimen or you have to give a formulation which is going to solve the problem. And what is discovery? It is an act or process of finding something. That means you are not inventing something. Particularly, it becomes very, very tough and almost impossible that you are going to invent something when we are dealing with natural products. Natural products, some sort of knowledge will always be uh, pre-existing. So but it may not be known to the fraternity. So the discovery process is the act or process of finding something. And if we analyze text, it seems that Upalabdhi is somewhat related to the discovery process. And to do the Upalabdhi, we have Upalabdhi Karanam, which is known as Pramana. Upalabdhi Karanam iti Vyapakasya Sadhyasya Upalabdhi Karanam, means what you are trying to achieve, what kind of tools you are going to use, will be known as Hetu, and discovery of Bhava is Sadhya. That means what you are trying to understand or what you are trying to achieve, you will be the Sadhya Bhav that you are going to through experimentation, through observation, whatever methodology you are going to adopt, but you are ultimately going to the answer the research question, which can be known as the sadhya of your research. Then there are only 4 Upalabdhi Karana or Upalabdhi tools that we have in our text. They are the 4 Pramanas. So in one way or other, directly or indirectly, or in an interpretational manner, we will be using one of these Pramanas to actually do the drug discovery process. So while doing a drug discovery process, what we should remember, most important thing is that we must review and we must explore the literature. It is most likely that you will have some kind of indicative evidence or indicative information if you are trying to discover a drug. So existing occurrence, aptopodesh, is most likely because you are dealing with a natural product. So in natural product, either directly or indirectly, you will have some information where this product can be utilized for health improvement. So this is the first praman in drug discovery process. That's why when someone is venturing into drug discovery process, the review of literature, that is the most important process. Many times we come across people who have submitted drug discovery research proposals, but they have not done the review of literature minutely and diligently. So, but if you study our text and if you
study the contemporary research methodology, then the review of literature, how precise and how diligently you have done a review of literature, that will actually improve the research proposal that you are going to present. So don't just imagine or don't just presume that no information is available about the substance for that particular purpose. Mostly indirectly there will be some kind of indicative knowledge available in the public domain. Therefore, available knowledge is the most important thing that you must first bring into your drug discovery process. Why? Because if you have to question something, that if it is, suppose I will take an example, in a clinical problem, you want Snigdha gun to be utilized. Okay, Vata Prakopa is there, Ruksha part of the Ansans. If we go for Ansans Kalpana, in a particular person, patient of Pakshaghat, you think that Ruksha gun is vitiated of this person. Now I need to, give, administer some sort of Snigdha gun. Then you have to ask yourself there whether if I am going, so what kind of substance I can utilize for imparting or for administering snigdhatva to the particular person. Then you have four snehas like grita, taila, basa, majja. Then now if we take grita and taila are the most commonly used sneha substances in Ayurvedic clinical practice, but they have very different properties. One is ushna snigdha, one is shita snigdha. So that means if you do not review the literature properly, then you will think that okay, whether grita or whether taila, whatever is available, I can utilize. But it is not likely that. Sir, it is not like that. Why? Because if you are dealing with a kapha prakriti patient or a patient where kapha association is there with the ruksha association of vata, then you cannot go for shita snigdha through grita. You have to go with the ushna snigdha of the taila. Similarly, suppose pitta association is there with the ruksha ansansa association of vata, we have to go for the ushna snigdha through taila. So this kind of literary review must be a part of drug discovery process, and then only we can ask a question in I am looking for a Ushna Snigdha substance, whether Tila Taila is good, whether Sarsapa Taila is good, or whether Narikala Taila is good, then that answer will be more logical and it will be more pinpointed. So my point is that whoever is trying to discover a drug, they must review the literature well for seeking the answers. Then we will come to the crux of the matter, how to design the formulation or the bases. हम लोगों को इस प्रकार की डिजाइनर बन सकते या नहीं बन सकते. Sometimes हम लोग जब when we are talking in a lighter sense, we are all fashion designers. We can all design our formulations, and it is reflected in the market through the numerous number of so-called patent or proprietary medicines. That means so many fashion designers of medicine are actually available in the market. So how they are designing their formulation and how they designing in our case the formulation is the basis. To design a formulation, you must know what is the underlying principle, where I cannot debate what is the most fundamental principle, what is the most underlying principle, जिसको छोड़ के आप कभी भी नहीं जा सकते. जैसे हम लोग स्टूडेंट के बारे में बात करते हैं कि जो अध्येता है वो पठन पाठन को छोड़ के जा नहीं सकता, उसके हर एक कार्य में पठन और पाठन एक हिस्सा बनना चाहिए. ऐसे ही जब हम कोई भेषज की डिस्कवरी या डिजाइन करने की कोशिश करेंगे, उसमें एक चीज क्या है जिसको हम कभी भी नहीं छोड़ सकते. उसके लिए चरक बोलता है कि तदेव युक्तम भैषज्यम यद आरोग्याय कल्पते. So once you have defined a problem, for you the arogya, as we are discussing about the example of diabetes, type 2 diabetes mellitus,
और प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल को आप रिड्यूस करना चाहते हैं, तो दैट मीन्स आपका जो फॉर्मुलेशन है ये इस लाइन को कभी भी नहीं छोड़ सकता है कि मैं किसी भी रोगी में इस औषध को दूंगा तो उस टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस के रोगी में तो वो उसकी प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल को रिड्यूस करना चाहिए, चाहे वो भला और कुछ करे ना करे. So how I have taken that, because Charak is telling that what arogya you are going to contemplate, you must achieve that through it your medicine. So you have, while designing a formulation, you must know your target and you have to ensure that your target is not compromised in at any step. And second, to achieve the target, you must have rational. If you don't have your yukti, why? Tasmat na vishaja yuktam yukti vahyena veshajam. So what Charak is telling, that you may contemplate arogya, but you must also rationalize arogya. You cannot just think that I am going to give this and you are we will remain just optimistic that this is going to happen. So that is called wishful thinking, that many times things may work in favor of you and the patient and you may get the result, but that's not how the clinical practice should or clinical research should function. You must pre-rationalize how you are going to achieve that particular target, what you are targeting, and that rationalities is actually reviewed and evaluated by your peers. And in the last class also we had discussed that even if there is direct in what we call adesh in the shastra that you will use this particular medicine in this particular clinical condition, then also in each and every patient that comes before you, you must rationalize your regimen before administering. What we have, what the text says, that tasmat sati ape nirdeshe कुर्यात ऊह्य स्वयं धिया विना तर्केण या सिद्धि यदृच्छा सिद्धिरेव सा. And in the last class I also have highlighted, this is what we call in the contemporary research methodology as the bias in research. If you are chance bias, means if without rationalizing you are getting some result, then that result is, the success of that result is not attributed to your science or to your competence, but rather to the chance. So Charak has told that this kind of success we are not contemplating in Ayurveda. We are trying to contemplate where the physician can pre-rationalize that because I am going to do this and that, then these results are going to happen. So these three things you need to employ while designing a best basis. That first thing is that you are going to try, you are going to achieve the target that you are trying to achieve. So it may be, suppose many times compartmental targeting does takes place. I'm giving one example. Suppose in case of a AIDS patient, in case of a AIDS patient, we think that I am not going to cure this patient, but I will just try to improve the quality of life, and only one particular arm of quality of life, that this person should not feel less energetic. I will try to improve the energy level of the patient. So my target will be, through my medication, through my regimen, this person, the any AIDS patient is coming before us. If we give this particular medicine for some certain period of time, then it will give energy to those patients who are taking them, so that they won't experience lack of energy. So in that case, you are not arogya has been compartmentalized, what you call compartmentalized, to only improvement of the energy level of the patient. So that's how we have to think, that what exact target we are trying to achieve through our medicine, and whether our medicine is achieving or not that, achieving that or not that. Once we have targeted that lack of energy we are going to improve, then we have to rationalize. Suppose we take ashwagandha for that purpose, then we have to say what logic we have that ashwagandha, on basis of on basis of its rasa, or on basis of its guna or virya or vipak,
is actually going to improve the energy of the user. And if that rationality is established, then we can go for a trial. This is one point that I think most of the people, they do not I mean contemplate in Ayurvedic fraternity. See, we have many things which are used as ahara, which are also used as aushad. Then there are certain things which are called as vishadravyas, and they are also used as aushadadravyas. So what is the difference between these three types of substances? Because Charak says that yogadapi visham tikshnam uttamam bhesham bhavet bhesham chapi duryuktam tikshnam sampadyate visham. That means Charak is telling that if you know how to use a substance, then the same thing which is now commonly known as as a very known as a poison can actually be a very good medicine. Similarly, if you do not know how to use a substance, then the most safe substance can also act as a poison. Uh, so my understanding is that we have 20 gunas which are actually playing in the physiological canvas of a person. Through Guru Guna, some physiological functioning takes place. Similarly, through Lagu Guna, some physiological functioning take place. And that's why the 20 gunas or some additional gunas, what they have accepted also, through these gunas, all the physiological or the metabolic functioning of a person takes place. So, when I am taking an ahara, the ahara and aushad, which are particularly the aushad, which are considered as broadly safe, in those substances, there will be a primary guna through which the main physiological or pharmacological action is going to take place. For example, if we are targeting Brunghana karma through an ahara dravya and we are taking a masha as the dravya, then the gurutva of a masha is actually going to give Brunghana to the person who is using that. But when we are imparting gurutva through masha, then the opposite guna is that lagu. So if lagu is not regulating a mass, the gurutva of mass, then what happens? Then uncontrolled physiological functioning of guru gun is a possibility now, because you have given gurutva through masha, but there is no lagu which is going to regulate the gurutva. In that case, the person who is consuming the guru guna through masha may actually see hyper brunghana karma. So in case of ahara dravya, the nature has given that amount of lagu guna to that ahara dravya, where it regulates and it also stimulates the guru guna of that particular ahar dravya to function within a physiological limit. It is little bit difficult and complex phenomena to understand in terms of physiology and pharmacology, but this is how the things work. When you are giving a masha, it has guru gun, it also has the lagu gun that has been given by the nature, so that when you are consuming masha in accepted quantity, then it is not going to create a problem. But in case of poisonous substances, for example, if we say dhatura, this dhatura is a poison, and it is poisonous because of its ushna and tikshna and gun and beva and vikasi gun also. But why it is acting as a poison? Because to counter the ushna tikshna and bevai and vikasi gun of dhatura, nature has not provided anything inside dhatura where it can self regulate the possible actions of dhatura. But in case of ahara dravya and in case of the commonly accepted safe aushadha dravyas, nature has provided the opposite gunas which can regulate the pharmacological or the physiological effect of those substances in the
human biological system. So this is how you have to contemplate designing a formulation in Ayurveda. What kind of medicinal substances are using, whether they are self-sufficient to counter the possible negative or possible adverse drug reactions that may come across. Because as you will all agree and all appreciate, that if Ushna, Tikshna, your Guru, or Lagu, or whatever guna you say, you are trying to achieve through your medicine, if it goes uncontrolled, it will create a problem in the patient. So we need a regulation of that particular activity, and if that regulation is available in the in that substance naturally, then it is good. If it is not available naturally, then what is the solution? We have the sanskara, we have the additional addition of other ingredients to the formulations, where it can counter that possible harm causing gunas. Now we'll come to the conventional drug discovery process. Why I have taken this? Because this is what people think we can do. New drug discovery means conventional drug discovery, and whether this same drug discovery process can be replicated in Ayurveda, or we need to modify certain things. We will see in the in this presentation. The conventional drug discovery process involves two things. One is complete discovery. That means nothing was known about that particular drug. It was discovered completely. And second is repositioning. That means some drugs were known for some particular indications, but they are now discovered for being to be utilized for certain other indications, like some antiviral drug was used for say management of AIDS, and now it is being used for the management of say COVID-19 virus. So that is called as repositioning of drugs. That means in that condition, when repositioning take place, certain amount of information of the drug is already available, only the pharmacodynamic part is we are changing. Then in that case we must know what is the therapeutic target. Once we know the therapeutic target, we go for a compound study. Means what compound we are going to use as a drug, what information do we have, that and under the compound studies three main parts are there. One is chemistry, then manufacturing, then the control. Means what quality control parameters will be applicable, so that replicability or reproducibility of therapeutic targets can be achieved. After compound studies information is available, then we go for preclinical studies. In preclinical studies, it starts with in vitro and also in vivo studies, and after preclinical studies we go for clinical studies, where human clinical trials do take place. This is how a conventional drug discovery takes place. And in case of complete discovery, it typically takes 8 to 10 years, and the success rate of drug discovery is roughly 10 to 15%. That means if 1 lakh new drug compounds are presented before the world, out of that only 10 to 15% of the drug actually come to the market. This is how the success rate comes. And in compound studies, they do lead optimization. Means how this receptor and ligand binding takes place, whether this particular compound or this particular formula is going to bind with the receptor that we are targeting as a therapeutic target. Then chemistry is there. Means what will sorry, what will be its chemistry, both in terms of its chemical formula and also in terms of its molecular geometry also. And after chemistry is known, then we go for manufacturing, whether this can be manufactured or not. This is how conventional drug discovery works. Because many times structural elucidations we do take, sorry, we do can I mean we can do, but actually in lab we cannot manufacture that. These kind of issues is common in drug discovery. So after chemistry, that means the structural elucidation. In structural elucidation, two parts are there. First is the chemical formula, second is the molecular geometry of that compound. Once that is elucidated,
then they go for testing the manufacturing, whether it can actually be manufactured in a lab, and then after lab, whether it can be scaled up to the industrial manufacturing scale. These things are tested. Then they develop controls. Why controls are required? Controls are the parameters which ensures the reproducibility of that particular chemical substance. Because without the knowledge of control, suppose something needs to be processed at 80 degrees centigrade for 16 minutes, then the 80 degree centigrade and the 16 minutes time span is known as control. If that is not known to another person, he may just heat that particular substance at 100 degree centigrade, say for 15 minutes, then the entire chemistry changes. So that's why the control parameters also form part of your compound studies. And how the chemistry conventionally works, then basically they work with combinatorial chemistry, where they have a library of linear and macrocyclic molecules, because most of the modern pharmacological drugs are linear and macrocyclic molecules. So they have a library. That means they know what are the linear molecules, what are the macrocyclic molecules, and they are peptides, non-peptide oligomers, peptide mimetics, small molecules, natural product like organic molecules. That these form the part of library that what we call as computer assisted drug designing, or CAD. In this we have database of molecules where their chemical structure and molecular geometry has been already elucidated. And after that, once they know the therapeutic target, that means they will be now targeting that this molecule I am going to use, and this compound or molecule is going to bind with this receptor. Once it binds with the receptor, it will act. So they use this Lipinski rule, all these things, drug likeliness. But before that, how do they do it? They put it into a software which is known as high throughput screening for individual interaction with biological target. The biological target is typically a receptor. Whether a molecule or a compound is binding to it with the receptor or not is screened through this high throughput screening. If that passes this test, then they have different methods to test whether a particular drug molecule is binding with the target receptor or not. For that, they have different methods like multi-pin methods, T-bag method, one bead one compound methods. There are many methods they use it, and based on the method and the throughput screening, they say that yes, on basis of computational knowledge and combinatorial chemical knowledge, we can say that this particular molecule or this particular compound can be a likely drug. And and those positive compounds which pass through the high throughput screening, they are known as positive compounds. They will be put into the library, which is known as direct or via decoding. Via decoding means they may not have kept the exact molecular geometry in the library, but if one knows how to decode the molecular geometry, then via decoding one can know what would be the possible ligand receptor likeliness. Then there are virtual libraries. Computations of everything is inevitable nowadays. And so the combinatorial chemistry, which were happening, say, I think 25 to 30 years back, everything was happening through pen and paper, where this organic chemist used to draw the molecular formula and molecular geometry and try to superimpose with the receptor complex, whether it is binding or not. Now, everything has been computerized. There are softwares available which are called as molecular docking software and all those things, and all this, that branch is known as now CADD, that is CAD. That means computer assisted drug designing methodology. And this is also known as in silico study of medicinal substances. This is not in silico because it is happening through a chip. That's why silicon is involved. That's why it is known as in silico studies.
And instead of using a physical database of molecular compounds, we are using a digitalized library, and docking molecular docking is done through software where hypothetical and the digitalized molecules or digitalized compounds are superimposed on the target receptors, whether they are binding or not. If they are binding, they will pass through. If they are not binding, they are not going to pass through. So there are software which actually evaluate the algorithm of this receptor ligand binding likeliness. If that passes through that algorithm, then these are known as the likely drugs. This is how the modern drug discovery takes place. And for virtual skimming, they have molecular docking. They also do it pharmacopoeia mapping, means whatever pharmacopoeial drugs are available, whether what the molecular compounds that are passed through the molecular docking software, they are available in the pharmacopoeia, they are similar or not, that or they are similar or not, these are also tested. Then quantitative structure activity relationships are also done through software. What means what is what is quantitative structure activity relationship, which we normally known as QSAR? It is nothing but if I increase the amount of the dose, whether the activity increases or not. That also the software says that if you give 20 mg per kg body weight, then this amount of this amount of pharmacological activity will be seen. But if you increase it up to 30 mg, then there will be an increase in the pharmacological activity, and there will be a threshold where there will be no increase. Suppose after 50 mg, there will be no increase in the activity. So this is known as quantitative structure activity relationship. So there are biochemical functional assays, then there are enzymatic functional assays, then cell-based cell-based functional assays. What it means that after these compounds pass through all these softwares, what they do, they will create a simulating biochemical environment as human physiological biochemical environment is, and try to see whether this drug is actually changing the biochemical environment of the simulated human biological system. Similarly, whether it is impacting the enzymatic ecosystem of human that has been isolated. And finally, cell-based studies also are there, which is popularly known as cell line studies. This is how modern drug discovery process take place. Once all these things are passed, then they come to the actual physical laboratory where the structure elucidation takes place in the chemistry lab. Means what was seen in the computer, whether this can be replicated in the physical chemical laboratory. Many times what is seen in the computer may not actually be synthesized in a stabilized manner in a physical chemical laboratory. These studies required to be done because ultimately a patient will be using a physical drug. He is not going to use a software, or he is not going to eat it digitally. So digitally one compound might have passed, but if it is not possible to manufacture or synthesize that particular compound in lab, and that too we need certain stability period. Means if I can manufacture a particular chemical for say 2 days, then that is not going to work, because from the manufacturer to the user there will be a time lag, say 6 months to 1 year. So whether my substance, what I am going to manufacture, can actually stay like that for 6 months or 1 year or 3 years, it is also being studied. The more the stability, the more is the shelf life of that particular drug. Then, as I was discussing, what are the control means standard conditions for reproducibility. After all these things, then only they go for preclinical studies. In that, they commonly conduct acute toxicity studies, chronic toxicity studies, repeated dose toxicity studies, or subacute toxicity studies. And there are other toxicity studies like genotoxicity,
and radio contamination, all those studies. It also depends upon what medicinal substance they're trying to utilize. Then there are efficacy studies, and most importantly, in the case of a conventional drug discovery, dose fixation studies are done through an animal, because whatever chemical, on a computer it was available, now there it must be explored in an animal model whether in that dose it is working or not. And this dose fixation study has become very, very important in context of Ayurveda. I'll give an example. Suppose I have given a person or 3 grams of say ashwagandha churn for a particular clinical target. It after the clinical trial, I have seen that it is not working, but it doesn't actually reflect the light whether if 6 grams of ashwagandha could have actually given the result. So dose fixation studies, what they do in animal, we also need to do in animals. Because we are now trying to deviate in one way or other from the Ayurvedic principle of individualized dose fixation. We are going with a generalized dose fixation, that every person that comes before us, we are giving say 5 to 10 ml of syrup, or 20 to 40 ml of a quath, then 3 to 6 grams of powder. We are going with a generalized dose regimen, uh, but we have no information, backend information, whether it is working in 3 grams in certain people, whether it is working in 6 grams in certain people, or in a particular therapeutic target only 8 grams of ashwagandha should be used. These kinds of studies are lacking in Ayurveda, and some sort of studies have already started. Then efficacy studies also are done on animal. After that only clinical studies are there. Then there are 5 phases of clinical studies that most of you must be knowing, and in the 3 months course they might have taught you about the phases of clinical trial. This phases remains a gray area. Some people say there are 4 phases, some people tell there are 5 phases. This is a gray area, but as per World Health Organization, there are 5 phases. It starts from 0 to 4th, and 0 is the clinical trial, where they just try to see uh, like a proof of concept, whether what was seen in the animal model is actually replicating in human model or not. And the sample size is not watertight. It may in many books it is written as 10 to 15, in many books it is written as 5 to 10, in some up to 30. It depends upon the clinical target or the therapeutic target we are working upon. For example, if you are targeting anemia, then 30 will be a good enough sample for phase 0. But if you are trying to work in a particular type of say squamous cell carcinoma, then 5 patients are good enough for a phase 0 trial. Similarly, phase 0, phase 1, phase 2, phase 3, phase 4, there are 5 phases of trial that other people will taught you. Then we'll come to how the traditional drug discovery process means, as per Ayurvedic knowledge, how new drugs were added to our knowledge system. So the first question that comes to my mind, at least it came to my mind, we have many medicines, we have many formulations, many medicines that becomes part of our documented knowledge system. Some in Samhita, some in Chikitsa Grantha, some in Rasa Shastra. There are many formulations that we already know before the systematic and pharmacopoeia or formulary based regulations took place. So are we allowed to design a new formulation? दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन वी मस्ट आंसर. क्या मुझे कोई एक नई औषध या नई नई योग बनाने के अधिकार है या नहीं? बिकॉज देर आर सो मेनी योगस दैट इज ऑलरेडी अवेलेबल टू मी फॉर therapeutic targets that I am working upon. So the first question is that whether we are allowed or not. If we are not allowed, then
फिर वक्त बर्बाद क्यों करना है? जो काम करने की हमें अनुमति नहीं है उसमें हमें वक्त बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। इसीलिए पहला प्रश्न ये आता है कि क्या हम एक नया योग या एक न्यू फॉर्मुलेशन ऐड करने की अधिकारी है कि नहीं। एंड मैं पहले ही आपको पहले क्लास में बोला था कि हम लोगों का हर एक आंसर हमारा शास्त्र के आधार पर होता है। सो वी विल सी व्हाट टेक्स्ट सेज। टेक्स्ट सेज दैट Ayurveda is a very liberal and progressive knowledge system, unlike what popular belief is. बहुत लोग सोचते हैं कि ये इसमें जो लिखा गया है उसको बदल नहीं सकते, जो हमको बताया गया उतना करना है। बट टेक्सचुअली इफ यू एनालाइज विथ ए सेन माइंड, अगर आप स्वस्थ मस्तिष्क से आयुर्वेदिक की टेक्स्ट को एनालाइज करेंगे, हाँ, ये हमारे जो शास्त्र है हमें कभी नहीं रोका है कि आप आगे नहीं बढ़ेंगे। जो आपको ये बोलता है कि जब महाकषाय को कंक्लूड करते हैं तो चरक ये बोल रहा है कि एतावंतो ही अलम अल्प बुद्धि नाम व्यवहाराय बुद्धिमताम च स्वलक्षण्य अनुमान युक्ति कुशल नाम अनुक्तार्थ ज्ञानाय इति। मीन्स whatever is written in the text, it is only for utilization for in a day-to-day clinical practice. If you are willing not to do a lot of mental exercises, then you can use these things and you will be good enough in your clinical practice. But if you are good enough and you are inclined to challenge your intellect, then you use these yogas or you use these mahakasayas, whatever is advised in the text, as only exemplary knowledge. You use them as example to design and develop your own formulations. There is no stopping to this. So that means even Sushrut says that samiksha dosha vedanscha bhirnan misran bhirnan prayojay. When Sushrut says that there are 37 ganas, after every gan he has given a falashruti that where these ganas can be used. And to conclude that, he is telling that when a person comes before you, you analyze samiksha dosha vedanscha, what actually the dosha status of that particular person. Then you can add these ganas, you can take a part of these ganas, or you can take only one substance from the ganas and utilize it to achieve your therapeutic target. So to sum up, as per my understanding, the Ayurvedic text or the Ayurvedic knowledge says that you can add as many as you can, but you must remain within the limits of yukti, and you must ensure that you are giving the targeted arogya that you have hypothesized. अगर आपकी युक्ति सही नहीं है और आप जो चाहते थे वो नहीं हो रहा है, देन आप उसके लिए अधिकारी नहीं कि आप एक नया योग बनाएंगे। पर अगर आप युक्ति संपन्न है और आप जो चाहते थे टारगेट जो आपने प्री हाइपोथेसाइज किया था वो टारगेट आप ला पा रहे हैं, देन यू आर फ्री एनफ टू डिजाइन and discover n number of new medicines. And so to do that, what are the factors to be evaluated for designing such a formulations? And we will be seeing that in context of the contemporary drug discovery process, what we are discussing about this molecular docking, etc. So what are the two fundamental factors? One is there must be a rationale before the researcher. If the researcher doesn't, lacks a logic, then there is no permission for that researcher to go ahead for a new formulation. So to get a permission to qualify to design a new formulation, one must have a robust logical therapeutic target and drug for solving that target. Then one must know what arogya he or she is going to achieve. Why I am telling what target? Because arogya is a broad term that has been used in the principle, but in case of a new drug designing, we must define what particular target we are going to achieve through this medicine. If we say that we are going to improve the hemoglobin level of the patient, then we must achieve that target. If we say that we are going to improve the lakshana in the panduta,
then what Lakshans we have defined, then we must achieve that through that formulation. That's why the Arogya or the therapeutic target in a same clinical condition may be different, but it must be predefined, and whatever formulation we are going to utilize, it must achieve that target. These are two things which no one which we cannot compromise while designing a new formulation. One is it must be rationalized, second it must achieve its target. And to do that we must have intellect, because yukti is two in context of Ayurveda. One is yukti is a pramana, and yukti is also is a guna. So yukti is also a guna that the physician must possess, and at the same time yukti is also pramana that is going to be utilized while designing a formulation. And to do a yukti, one what he says that buddhi hi pashyati ya bhavan bahu karana yogajan yukti strikala sa gya trivargah sadhyata yaya. That means if one is not good enough with his or her own intellect, then he or she doesn't qualify to design a new formulation. It may sound blunt, but it is the reality. If I am not good enough with my intellect, then I don't have any right to think of designing a new formulations, because my buddhi is going to design, develop the rationality behind the development or designing of a new formulation. So one must have intellect. And second, to implement a yukti, there will be so many factors which will be interplaying, which Charak says that bahu karana yogajar. That means we must identify what are the factors that may influence the outcome of this particular medicine. Do I know all those factors? If I know all these factors, what will be the sub criteria of those factors under which this medicine is going to work? This kind of information is required for before designing a new formulation. That's why a new formulation designing and positioning is not that easy, because many times we may think a little bit about a formulation and about the factors that may influence the outcome, therapeutic outcome of that formulations, but we may simply omit, or we never knew that this may also affect it. And while going for a clinical trial, we see that it is not working because these factors have influenced the outcome. So that's why the more uh, karanas one knows and one analyzed while designing a formulation that can influence the therapeutic outcome, the better will be the formulation that he or she is going to design. Then what is the second guiding principle? We must know the clinical or the therapeutic target, because Charak says that rogam ado parikshata tadanantram aushatam. If you do not know your therapeutic target and you are trying to design or develop a new medicine, then you will be into the domain of chance success. Many times we come across many formulations where they claim that it is good for this particular clinical condition, but they have not identified the target properly. So in some patients the formulation is working, in some patients the formulation is not working. Why this situation comes? Because the developer or the designer has not thought about the specificity of the target. Okay, and how the specificity of target will can be achieved. One must try to solve the riddle of the interplay of the gunas, because ultimately what chikitsa as per Ayurveda is viparita gunair desha matra kala upapadite vesajair vinirvartante vikaraha sadhya sammataha. That means when you are trying to solve a clinical problem, you are trying to do nothing, but you are trying to administer viparita gunas to that particular person. Keeping in context what matra, what kala, and what desha it is being used.
it is being administered. So if one can analyze that, then only you can design and develop a formulation that is going to work. Because with every formulation we do give a prescription guideline that this is not going to be utilized in, say, Paitik Prakriti. If you analyze Samhita, they say that if Sarpagandha you are going to utilize, then be careful in cases of Paitik Prakriti, or in people where Pitta predominance or Pitta Prakop is there, then this may cause a problem and it may not give therapeutic outcome that you are looking at. So same way, if I may design and develop a formulation which may work in certain set of people with the same clinical condition, but I must make it public, so that the other person who is other physician who is using, he knows that I cannot use this particular medicine. से अगर हम वय की बात करते कि इसको हम 16 साल की नीचे की बच्चों में दे नहीं सकते, या इसको उष्ण प्रदेश में या उष्ण काल में नहीं दे सकते, इस प्रकार की इंफॉर्मेशन हमें अपने उसके योग के साथ देना पड़ेगा. ठीक है, तो these are the three factors, and the interplay of gunas in particular clinical condition. जब तक आपको पता नहीं है, तब तक आप एक ड्रग इफेक्टिव ड्रग डिजाइनिंग और ड्रग डेवलपमेंट नहीं कर सकते. इस मैंने आपको पहले ही एग्जांपल एक दिया था कि उष्ण स्निग्ध और शीत स्निग्ध में कैसे डिफरेंस होता है. ऐसे ही मान लीजिए आपको गुरु से कुछ काम करना है, तो एक शीत गुरु मिलता है, एक उष्ण गुरु मिलता है. ठीक है, ऐसे ही एक गुरु स्निग्ध मिलता है और एक रुक्ष गुरु भी मिलता है. तो हमें क्या चाहिए उसको हमें पता होना चाहिए, और उसी हिसाब से आयुर्वेद चलता है. तो जब कोई न्यू फॉर्मुलेशन आता है, तो आप लोग सभी क्लिनिकल प्रैक्टिस में जो लोग हैं उनको पता है कि कुछ कुछ हमारे पास ऐसे औषध आता है, कुछ लोगों में बहुत अच्छा काम कर जाता है, और अगले दिन और एक पेशेंट वैसे ही क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम लेके आया था और उसमें काम नहीं करता है. तो हम सोचते हैं कि यार पता नहीं क्या हुआ, बट द रियलिटी इज दैट द पर्सन वाज डिफरेंट. सो द इंटरप्ले ऑफ द गुणस, लाइक उसमें हमको जो मेन क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम मिला, वो हो सकता है मान लीजिए आपकी रुक्षता के कारण मिल रहा है, तो आप वात प्रकोप ड्यू टू रुक्ष गुण तो आइडेंटिफाई कर रहे हैं, लेकिन उस व्यक्ति की जो एसोसिएटेड गुणों की स्ट्राटा था, मान लीजिए उसमें लघुता की प्रादुर्भाव है, और हमने वहां उसको लघु को कंसिडर नहीं किया और एक उसको लघु गुण वाले और एक औषध दे दिया, तो उसमें लघु जो गुण था वो और ही प्रिडोमिनेंटली एक्शन करके उस रोगी में तो काम नहीं करेगा, और जो जिस जिस रोगी में वहां गुरु गुण का प्रिडोमिनेंस था, उस रोगी में तो वो काम कर गए. तो इस प्रकार, क्योंकि आयुर्वेद होलिस्टिक मेडिसिन में काम करता है, तो ये 20 की 20 गुण जो है ना वो शरीर में मिलता है, और हम एक गुण को टारगेट करते हैं और बाकी गुणों को अगर हम नजरअंदाज कर देते हैं, इफ वी इग्नोर, देन वी विल बी कमिंग अक्रॉस दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम. फिर एक नेक्स्ट स्टेप जो है, मैं कंटेम्पररी ड्रग रिसर्च की बात, ड्रग डिस्कवरी की बात ऑलरेडी आपसे कर लिया था, पर ये मेरा खुद का ऑब्जर्वेशन है कि जितने भी आयुर्वेद में ड्रग रिसर्च होता है, वो सभी जब मोड ऑफ एक्शन लिखने के लिए जाते हैं, कुछ कुछ लोग जो उसकी केमिकल कंटेंट्स है उसके आधार पर उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, और कुछ कुछ लोग जो है उसको रसगुण वीर्यता के आधार पर मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके लिख देते हैं. बट यू सी, आयुर्वेद हैज एक्सप्लेन एंड एस्टेब्लिश्ड कि हमारा ड्रग कैसे काम करता है और उसके लिए क्या क्या मोडालिटीज है, वो चरक ने लिखा है, जिसमें आता है कि ये न तो केवलम गुण प्रभावात एव द्रव्याणि कार्मुकाणि भवन्ति, द्रव्याणि हि द्रव्य प्रभावात गुण प्रभावात द्रव्य गुण प्रभावात च तस्मिन् तस्मिन् काले तत्तत् अधिकरणम आसाद्यम ताम ताम युक्तिम अर्थम च तम तम अभिप्रेत्य यत् कुर्वन्ति तत्कर्मम येन कुर्वन्ति तद वीर्यम यत्र कुर्वन्ति तद अधिकरणम यदा कुर्वन्ति स कालः यथा कुर्वन्ति स उपायः यत् साधयन्ति तत्फलम.
ये अधिकतर लोगों को याद होगा, बट हाउ इट इज यूटिलाइज्ड इन रिसर्च। तो हम लोग जब अपने ड्रग रिसर्च करते, वी मस्ट try to explain our drug action in context of this कि हमारा द्रव्य क्या कर्म किया, what is the main pharmacological action of our द्रव्य, whether it did dipana, whether it did pachana, whether it did rechana, or whether it did asansana, whatever जो कर्म हम लोगों को पता है उनमें से कौन सा कर्म किया, हमको उसको डिफाइन करने की प्रयास करना चाहिए। और उस कर्म को करने के लिए उसने द्रव्य का कौन से प्रिंसिपल को यूज किया। फॉर एग्जाम्पल, अगर आरगवध ने सॉरी हरितकी ने अनुलोमन किया, तो हमने लिखा कि हरितकी यत कुर्वन्ति, हरितकी अनुलोमनम कुर्वन्ति करके हमने लिखा है कि हरितकी का कर्म अनुलोमन था। तो ये किससे किया, उसके रस से किया, उसके वीर्य से किया, उसके विपाक से किया, या उसकी प्रभाव से किया। वॉट एवर वी फाइंड रैशनल, वी मस्ट ट्राई टू डिफाइन दैट। देन यत्र कुर्वन्ति तद अधिकरण। व्हाई दिस इज इम्पोर्टेंट? बिकॉज मेनी सब्सटेंसेस जो उस अधिकरण को प्राप्त नहीं होता है, तो वहां कर्म नहीं करेगा। जैसे मान लीजिए अभी हम बात कर रहे थे हरितकी के, हरितकी अनुलोमन करती है, पर अनुलोमन कर्म वो सिर्फ महाश्रुतुष में करती है। अगर हम सोचेंगे कि ये जाके आपकी मनोव श्रुतुष में अनुलोमन कर लेगा या रक्तव श्रुतुष में अनुलोमन कर लेगा, इस प्रकार के कर्म वो नहीं कर सकती, क्योंकि हरितकी उस अधिकरण को प्राप्त नहीं होता है। इसलिए the site of action where it did, it must also be defined. Many drugs despite having the rasaguna vipak that may have potential pharmacological action to take place in certain sites, they do not do that. Why? Because they do not get access to that particular site of action. ये हम लोगों को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो अगर तिक्त रस है तो पित्त प्रशमन करता है, अगर वो पित्त प्रशमन करने के लिए महाश्रुतुष के अधिकरण में वहां तिक्त रस एक्टिवेट नहीं होता है, तो वो वहां पित्त प्रशमन नहीं करेगा, जिससे आपको क्लिनिकली ये लगेगा कि उसको खाने पर उसकी अम्ल पित्त की लक्षण में उपशम हुआ। पर वही द्रव्य रक्त व श्रुतुष के अधिकरण को प्राप्त होता है, तो रक्त प्रसादन कर्म करके जाता है, तो वहां वह तिक्त गुण से रक्त प्रसादन कर जाएगा। तो इस प्रकार की एनालिसिस करने की पावर एक ड्रग डिजाइनर और ड्रग रिसर्च करने वाले के होना चाहिए। फिर यदा कुर्वन्ति सकाल, because every substance is not going to do फार्माकोलॉजिकल एक्शन एट एवरी टाइम। अगर हम किसी को रात में खिलाएंगे कभी काम नहीं करता है, किसी को शीतकाल में खिलाएंगे नहीं काम करेगा, किसी को उष्ण काल में काम खिलाएंगे नहीं काम करता। ये सब लोग हम क्लिनिकल एक्सपीरियंस से जानते हैं। बट वाइल डूइंग ए रिसर्च वी मोस्ट ऑफन वी जस्ट रिमेन साइलेंट अबाउट इट। बट तब फिर हमारी जो द्रव्य है उसकी डिजाइनिंग और डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। और ये सब डिफाइन करने के बाद यथा कुर्वन्ति स उपाय, ये यथा कुर्वन्ति स उपाय में एवरीथिंग कम्स इनटू पिक्चर। वेदर कुछ द्रव्य है जो क्वाथ के रूप में देने से काम करता है और हमने उसको सोचा नहीं, हमने उसको सिरप बनाया, तो वो काम नहीं करती है। ऐसे ही क्वाथ में काम करने वाला द्रव्य था और हमें लगा कि रोगी की यूज करने के लिए इसको चूर्ण बना के या इसको घनमटी बना के इसकी टैबलेट बना देते, तो we do not know whether it is going to actually do its pharmacological action when it is been converted from quath to ghanavati. So those things also need to be defined during a drug discovery process, in what kind of dosage। और जैसे आप देखेंगे कंटकारी के लिए वो लिखता है कि कंटकारी सपाणितम मूत्रकुच्छम हरेत। ठीक है, कंटकारी को फाणित के साथ देने पर वो मूत्रकृच्छ को जो लक्षण है उसको उपशमन करता है। तो दैट मीन्स फाणित इज ए अल्कोहलिक सब्सटेंस। तो जब अभी हम लोग बाय चांस कुछ एनिमल ट्रायल कर रहे थे, तो जो अल्कोहल एक्सट्रैक्टिव था, ठीक है, जो अल्कोहल एक्सट्रैक्टिव था वो बेटर एक्ट कर रहा है जो हमारा एक्वस एक्सट्रैक्ट था। सो दैट मीन्स
ये उपाय में आता है कि आपको फणित के साथ लेना था या आपको उष्ण जल के लेने के साथ लेना था। अगर कंटकारी को हमने उष्ण जल के साथ किसी रोगी को दिया और एक रोगी को फणित के साथ दिया, तो वो फणित में एक्ट कर रहा है, उष्ण जल में एक्ट नहीं कर रहा है। इस प्रकार से हमारा जो ड्रग है वो भी इस उपायों को वेट करता है कि इसको किस प्रकार से यूज करने से ये काम करता है, और उस सब होने के बाद ये क्या फल को प्राप्त किया। मेनी टाइम्स हम दीपन कर देते पर वो काम किया कि नहीं किया वो हम देखते नहीं, जो हमारा टारगेट था। सो दीज थिंग्स नीड टू बी इवेलुएटेड इन अ ड्रग डिजाइनिंग प्रोसेस। और जो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स होता है ड्रग डिजाइनिंग में, एक होता है फार्माकोलॉजिकल फैक्टर्स, मतलब व्हाट फार्माकोलॉजिकल एक्शन यू आर ट्राइंग टू अचीव। उस हिसाब से आपको उस द्रव्य की गुण कर्म को लेके फॉर्मुलेशन में देखना है वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और जब आप फॉर्मूला कर रहे हैं उसमें फार्मास्यूटिकल फैक्टर्स भी आता है, जिसमें क्या होता है कि हमने अभी तक आप देखेंगे जितने भी मार्केट में न्यू फॉर्मुलेशंस आए हैं, वो फॉर एग्जांपल हम वात शामक कोई फॉर्मुलेशन की बात करें तो वो वात शामक द्रव्यों की एक समाहार है। बट ऐसे फॉर्मूला डिजाइन नहीं होते, उसमें सिर्फ फार्माकोलॉजिकल पार्ट को ही किसी ने सोचा है। बट व्हाट अबाउट द फार्मास्यूटिकल पार्ट, क्योंकि जो फार्मास्यूटिकल में क्या होता है, फार्मास्यूटिकल पार्ट में आता है कि इसमें स्टेबलाइजर क्या होगा, इसमें बाइंडर्स क्या होगा, कौन फार्माकोकाइनेटिक या बायो अवेलेबल को एनहांस करने वाले इंग्रेडिएंट्स जाएंगे, क्या जो हमने मेन फार्माकोलॉजिकल एक्शन के लिए 10 ड्रग डाला है वो सब अपने आप में फार्माको एक्टिव कंपोनेंट में कन्वर्ट हो जाएंगे, या उनको फॉर्मुलेशन के थ्रू कुछ मदद चाहिए। सो देयर आर फार्मास्यूटिकल फैक्टर्स आल्सो। देन once you are adding certain substances, uh, don't think that ayurvedic medicine is not going to do an adverse drug reaction. This is possible, this is possible। इसलिए योग में वो और कुछ सब्सटेंस मिलाते हैं जो उसकी पॉसिबल एडीआर को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेगा। सो इसके बारे में भी फॉर्मूला डिजाइन करने के टाइम में सोचना चाहिए। देन देयर आर पेशेंट रिलेटेड फैक्टर्स लाइक हम लोग से पीडियाट्रिक पॉपुलेशन में कोई टारगेट फॉर्मुलेशन बनाना चाहते हैं और हम उसको पूरा तिक्त द्रव्य ऐसे दे दिए कि जिसको कभी मरे नहीं खाएगा बच्चा, देन उस कंडीशन में वैसे फॉर्मुलेशन डिजाइन और डेवलप करने का कोई मतलब नहीं है कि नहीं। सो पेशेंट रिलेटेड फैक्टर, और मान लीजिए कि एक पेशेंट है जो मुंह से खा नहीं पा रहा है, हाँ, जिसको ओरली हम उस ड्रग को दे नहीं सकते, उसको हम एक ओरल फॉर्मुलेशन डिजाइन करके उस रोगों के लिए रख दिए तो कोई मतलब नहीं। हाँ, वी मस्ट सी वेदर बस्ती के थ्रू दिया जा सकता है या और किसी मेथड से उसको दिया जा सकता है, इस प्रकार की डिजाइनिंग भी होता है। देन देर आर फिजिशियन रिलेटेड फैक्टर्स ऑल्सो। फिजिशियन रिलेटेड फैक्टर में यह आता है कि क्या हम उस चीजों को देना चाहते हैं या नहीं देना चाहिए, उससे सस्ते में उससे बेहतर कोई द्रव्य मिलता है कि नहीं, ये सब चीजें फॉर्मुलेशन जब कोई डिजाइन करता है न्यू ड्रग डिस्कवरी में, उसको आयुर्वेद की फॉर्मुलेशन डिजाइनिंग में ये सब फैक्टर सोचना पड़ता है। और जो फार्माकोलॉजिकल है उसमें कुछ फार्माकोडायनेमिक फैक्टर्स होते हैं, जैसे क्या डिजायर्ड एक्टिविटी करने वाला है, और फार्माकोडायनामिक फैक्टर्स में वो आता है कि आप क्या मुख्य कर्म कराना चाहते हैं, क्या वो योग में आप वैसे इंग्रेडिएंट डालें कि नहीं डालें। और जब आप मल्टी इंग्रेडिएंट फॉर्मुलेशन करते हैं वो एक संयोग होता है, संयोग होने में तीनों चीज हो सकता है कि जो दोनों इंग्रेडिएंट है उनका जो मेन एक्शन था वो जोड़ के उतना ही निकाल लेंगे या उससे ज्यादा निकाल सकते हैं, या दे मे ऑल्सो गिव राइज टू ए न्यू एक्शन। तो ये हमको शास्त्र बोलता है योगः सह संयोग उच्यते, संयोग पुनः द्वयोर बहुर्नाम व द्रव्याणाम सम्मति भाव स विशेषम आरभते। So if you are thinking of a sayog, then you may think that while I am adding two substances they, which individually have certain pharmacological action, but if I add them then they may give another pharmacological action। इस प्रकार की सोचने की आयाम को हमको देखना चाहिए, वेदर दिस जो भी इंग्रेडिएंट्स हम डालते हैं मुख्य कर्म करने के लिए वो सिनर्जिस्टिक एक्शन में है या कोई नया एक्शन करने वाले हैं। देन देर आर फार्माकोकाइनेटिक फैक्टर्स जो हमारे योग में होता है।
अगर आप कोई भी आयुर्वेद की जो शास्त्र में लिखा गया योग को देखेंगे और उसको एनालाइज करेंगे, तो आपको ये दिखेगा कि सिर्फ जो मुख्य कर्म करने वाले द्रव्य उसमें नहीं है, उसमें बहुत सारे द्रव्य है जो कम प्रमाण में भी है और वो मुख्य कर्म करने वाले नहीं है। फिर उनको क्यों डाला गया है? उनको शायद इसलिए डाला गया है कि देर आर ingredients which they added so that the pharmacokinetic factors are also addressed, because to do a pharmacodynamic activity you need absorption to take place, you also need distribution to take place to that particular site of action. Then you must also ensure that the drug, after doing its action, it must have the capability to go out of the system. For that you need that drug to be converted, whether it can be assimilated or it must be excreted out of the system. तो ये फार्माकोकाइनेटिक फैक्टर्स को भी देखना अब हमको पड़ेगा। जैसे जैसे भल्ला तक की हमको कोई योग करना है, तो भल्ला तक की योग करने के लिए योग में तो हमको उसकी मेटाबॉलिज्म के बारे में, उसको एक्सक्रीशन के बारे में भी सोचना पड़ेगा, अदरवाइज इट विल क्रिएट ए प्रॉब्लम। और कुछ चीजें अभी इस रिसर्च से बाहर आ रहा है, और ये खासकर हमारे जो सो कॉल्ड प्रोप्राइटरी और पेटेंट मेडिसिन को लेके है। ये कि ये आपकी लिवर एंजाइम्स को अप टू सम एक्सटेंट किडनी की जो आपकी मार्कर्स है इनको चेंज करते हैं, इनको इन ए नेगेटिव वे ये इम्पैक्ट करते हैं। और हमेशा ये नहीं सोचना चाहिए कि हम लोग आयुर्वेद की मतलब स्वस्थ क्या बोलते हैं उसको, नेचुरल द्रव्य यूज करते, तो ऐसे आइडिया नहीं होता हमारे एगेनेस्ट में ये एक मतलब लॉबिंग है, इस तरह का नहीं है। बहुत टाइम में ऑब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन आता है, और शायद इसीलिए आता है कि देखिए अगर आपने फॉर्मुलेशन में उनकी एक्सक्रीशन की नहीं सोचा, इसलिए आप देखिए बहुत सारे हमारे रसौषधि में भृंगराज सुरस से उनको भावना दिया गया। जो अगर आप उसको टारगेट देखेंगे, उस भृंगराज सुरस का कोई लेना देना नहीं था उस टारगेट फार्माकोलॉजिकल एक्शन कराने के लिए। जो मोस्ट लाइकली भृंगराज सुरस वाज यूज्ड सो दैट लिवर उसको मेटाबोलाइज करके उसको सिस्टम से बाहर निकाल दे, ताकि काम करने के बाद वो द्रव्य वहां ना रहे और कुछ प्रॉब्लम ना क्रिएट करे। सो इस प्रकार से फार्माकोकाइनेटिक फैक्टर्स को भी सोचने की जरूरत होता है जब आप ड्रग डिजाइनिंग करते। फिर फार्मास्यूटिकल में क्या आता है कि डेवलपिंग एक्टिव ड्रग इनटू इफेक्टिव डोजेस फॉर मीन्स कुछ द्रव्य है जो चूर्ण के रूप में ही जा सकते, आप उनको क्वाथ बनाएंगे और या आप उनको आशावरिष्ठ बनाएंगे, वो उस फार्माकोलॉजिकल और टारगेट थेरापेटिक एक्टिविटी को नहीं अचीव कर सकते। सो ए फॉर्मुलेशन डिजाइनर मस्ट नो व्हाट काइंड ऑफ डोसेज फॉर ही और सी इज लुकिंग एट। और ये सब रिसर्च की पार्ट होता है। कभी हमको रैशनल मिल जाता है, कभी हमको इंट्यूशन में चलना पड़ता है। अल्टीमेटली वंस वी हैव हाइपोथेसाइज्ड वी विल ट्राई, we will conduct an experiment to see whether what dosage form we are looking is actually working or not. मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर हमें लगता है कि लॉजिकली इसका चूर्ण होना चाहिए, देन हम एक क्या करते हैं कि चूर्ण और क्वाथ लेके उसकी एक स्टडी करते हैं कि क्या ये चूर्ण में काम करता है और क्वाथ में बराबर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इस तरह की स्टडी बहुत कम आयुर्वेद में देखने को मिलता है ड्रग डिजाइनिंग और डेवलपमेंट में, जबकि ये बहुत जरूरत है। फिर एक्टिव ड्रग प्लस एक्सिपिएंट्स, बिकॉज आप अभी हम उसको कमर्शियलाइज करना चाहते हैं, तो हम उसके साथ जो एक्सिपिएंट मिलाएंगे क्या उसके साथ कोई इंटरेक्ट कर रहा है या जरूरत है या नहीं जरूरत है। फिर प्री फॉर्मुलेशन पैरामीटर से कि फिजिकल कैसा रहता है, केमिकल कैसा रहता है, सॉल्युबिलिटी क्या है, स्टेबिलिटी क्या है, स्टोरेज क्या है, प्रिकॉशंस क्या रखना है। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, गुगुलू। गूगल आप देखिए इतने सारे गूगल हम लोग बनाते हैं, एंड नो वन एक्चुअली नोज व्हाट इज द डिसोल्यूशन पैरामीटर्स ऑफ द गूगल्स दे आर मैन्युफैक्चरिंग। क्या वो मान लीजिए वो 10 घंटे में डिजोल्व ही नहीं होता है, देन हाउ डू यू एक्सपेक्ट दैट इट इज गोइंग टू बी dissolved in the gastrointestinal tract of the person and it is going to be absorbed and going to do work। ये सब चीजें हमको देखना चाहिए। बहुत सारे टाइम में बहुत सारे फॉर्मुलेशंस आते हैं जिनकी फिजिकल, केमिकल और ये सॉल्युबिलिटी, स्टेबिलिटी के बारे में हमने सोचा ही नहीं। तो इस तरह की चीजें भी सोचना पड़ता है।
और उनके यहाँ तो पार्टिकल साइज जो आजकल नानो मेडिसिन वो बहुत ही पॉपुलर हो गया है कि सबको नानो बना देंगे तो अच्छा काम करेगा। तो बट जरूरी नहीं है कि एवरीथिंग नीड्स टू बी कन्वर्टेड इनटू द फाइनेस्ट फॉर्म फॉर एक्चुअली डूइंग ए फार्माकोलॉजिकल एक्शन, क्योंकि हो सकता है कुछ चीजों को वो एक कोर्स साइज में देना चाहते हैं ताकि वो लंबी समय तक काम कर सकता है। और एक पॉलीमॉर्फिज्म एक इश्यू है जो मॉडर्न ड्रग डिस्कवरी में आता है कि एक जैसे स्ट्रक्चर बन जाता है देखने में, और फॉर्मूला में एक जैसे है, लेकिन उनकी जो मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री है अलग होने के कारण वो बिल्कुल एक 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 कंपाउंड जो है एकदम फार्माको एक्टिव है और दूसरा कंपाउंड जो है वो फार्माकोलॉजिकली इनर्ट हो जाता है। इस प्रकार की हम लोगों के भी होता है। इसीलिए क्या होता है, कभी कभी हम उसको कुछ प्रोसेसिंग करते हैं जिससे वो शायद काम नहीं करता है, और किस पीएच में काम करता है, किस सॉल्युबिलिटी में काम करता है, इस तरह की चीजें हमको देखना चाहिए। और जो हम जितना मेरा एक्सपीरियंस है, बहुत सारे फार्मास्यूटिकल फैक्टर्स जो है वो आयुर्वेद की हमारा जो शास्त्रीय योग है उनमें उसकी कंसिडरेशन किया गया है। हमने 2 4 5 एक्सपेरिमेंट भी किया है। जैसे आप नवायस लोह लो के उसमें से कुछ इंग्रेडिएंट निकाल दीजिए, देखिए देखेंगे कि वो बाइंड ही नहीं होता है, वो टैबलेट बनता ही नहीं। और इस प्रकार से आप च्यवनप्राश में इतने सारे द्रव्य डालने के पीछे कारण क्या है, क्या इनमें कौन बाइंडर है, कौन स्टेबलाइजर है, कौन कुछ कुछ चीजें डाला जाता है जो सॉल्युबिलिटी को फैसिलिटेट करता है, क्योंकि जब तक सॉल्युबल नहीं होगा तब तक काम नहीं करेगा। कुछ चीजें डाला जाता है कि जो सेल्फ लाइफ को बढ़ाता है। सो ऑल दीज थिंग्स वेर एक्चुअली कंसिडर्ड बिफोर डेवलपिंग एंड डिजाइनिंग एंड डेवलपिंग अ फॉर्मुलेशन जो हम लोगों को मिलता है। तो मैं लास्ट में जो 2 स्लाइड है इसमें आप देखिए, ये सब आपकी च्यवनप्राश की कंटेंट है। तो जब हम लोग पढ़ते थे हम भी सोचते थे कि इतने सारे द्रव्यों को क्यों डाला है, और डाला है तो इसके पीछे क्या है, इसमें 2 घटा देते थे, दे हैव रिड्यूस, दे कुड हैव रिड्यूस 2, और दे कुड हैव एडेड अनदर 4, व्हाट वाज द प्रॉब्लम विद दैट। तो इसके ऊपर कुछ कुछ स्टडी तो हुए हैं च्यवनप्राश की फार्मास्यूटिकल स्टडीज में। तो इसमें जो बाहर आता है कि देखिए इसमें जो उन्होंने प्रक्षेप द्रव्य डाला है वो बेसिकली फार्माकोकाइनेटिक्स को मॉड्यूलेट करने वाले सब्सटेंसेस है जो इसके अवेलेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को बढ़ाता है, और कुछ सब्सटेंसेस है जो एक्सक्रीशन को बढ़ाता है, और कुछ सब्सटेंसेस है जो उसकी कंसिस्टेंसी को बनाने के लिए डाला गया है। जैसे आप आंवला है, अगर आंवले को ये जो बिदारी डाला है ना, इसमें बिदारी ब्रुसोमुलानी, कुछ लोगों ने बिदारी को हटा के कोशिश किया था बनाने के लिए, तो उस तरह की स्प्रेडेबिलिटी, उस तरह की कंसिस्टेंसी नहीं आ रहा था च्यवनप्राश में जो आना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह की चीजें उस समय लोगों ने सोच के इन सबको डाला है। और ऐसे ही देखिए ये जो आपका औषध है जिसमें शुद्ध पारद गंधक नाग भस्म इस तरह की बात विध्वंसनी वगैरह में डाला है। तो इनमें बहुत सारी इतने सारे चीजों की भावना डालने के पीछे क्या है, अगर आप देखेंगे तो इनमें सभी वात शामक नहीं है। त्रिकटु वात प्रकोपक है, त्रिफला जो ऐसे चित्रक मूल है, बहुत सारे चीजें वो वात शामक नहीं है। अगर आप उसकी प्राइमरी थेरापेटिक टारगेट देखते हैं, फार्माकोलॉजिकल टारगेट देखते हैं, वो बात समन कराने की कोशिश कर रहा है। फिर इसमें इतने बात प्रकोपक द्रव्य से भावना देने के पीछे क्या रीजन रहा होगा, तो उसमें कुछ कुछ लगता है कि जैसे त्रिकुटु दे रहा है तो क्योंकि इतने सारे हेवी मेटल्स दे रहे और इतने सारे कुछ टॉक्सिक सब्सटेंसेस हो सकते हैं, उनको एलिमिनेट करने के लिए भी कुछ इंग्रेडिएंट डालना पड़ेगा, ऐसे सोच के पहले डाला जाता था। और इस प्रकार की बिना सोच के हम लोग अगर सोचेंगे कि ड्रग डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट हो जाएगा मॉडर्न के जैसे, वो संभव नहीं है। एंड टू कंक्लूड, जो मॉडर्न की ड्रग डिस्कवरी प्रोसेस है वो एक सिंगल कंपाउंड या सिंगल मॉलिक्यूल बेस्ड ड्रग डिस्कवरी प्रोसेस है। तो उसमें उन लोगों की कॉन्सेप्ट ये रहता है कि जो मॉलिक्यूल है या जो कंपाउंड है वो अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट होना चाहिए, जो जाके अपनी फार्माको डायनामिक एक्टिविटी करे और फार्माकोकाइनेटिक्स को
भी मैनेज करें. So that's why they test the drug likeliness and then they go for the pharmacodynamic activity checking. But in our case we are using natural substances जिसमें multi compounds जा रहा है. तो multi compounds जा रहा है मतलब हमको जो परादी गुण में संयोग है उसके ऊपर ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा. When I am combining something with something, whether it is actually doing some facilitating factor or not, ये देखना पड़ता है. नहीं तो अगर हम सोचेंगे कि अश्वगंधा भी वात शामक है और एक द्रव्य है जो वात शामक, इस दोनों को जोड़ दूंगा तो बेहतर काम आएगा. तो ये जरूरी नहीं कि दोनों जब साथ जाएंगे तो वो उस काम को कर पाएंगे. ये चीजों को हमको देखना चाहिए. और टू फाइनली जो मुझे कहना है कि जब तक हम उस काबिल नहीं है तो हम अपने पास जितने शास्त्र में औषध है उनको लेके काम में चल सकते. वाई आई एम टेलिंग, जो आप हमारे शास्त्र में जितने औषध लिखा है उसको हम अगर प्रयोग करेंगे और उस टाइम में हम ऑब्जर्वेंट रहेंगे कि इसमें क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, देन ओनली वी कैन डिजाइन ए न्यू फॉर्मुलेशन. अगर हम जो हम मैंने शुरू किया था कि आप्तोपदेश इज द फर्स्ट पॉइंट फ्रॉम वेयर ए ड्रग डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट एक्टिविटी टेक्स प्लेस. अगर हमने अपनी एग्जिस्टिंग औषध को आयुर्वेद की पैरामीटर से ढंग से ऑब्जर्व नहीं किया देन व्हाट राइट डू वी हैव टू एक्चुअली थिंक ऑफ ए न्यू फॉर्मुलेशन. कुछ कुछ फॉर्मुलेशन हमारे अच्छे आते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं आया, बट मोस्टली हम आप सब लोग एग्री करेंगे जो हमारा पहले की शास्त्र में जो फॉर्मुलेशन था उस तरह की फॉर्मुलेशन बनाने अभी रिसेंटली शायद ही कम लोगों ने ऐड कर पाए. बिकॉज we have not observed how our existing formulations work in context of a clinical picture. तो ये ड्रग डिस्कवरी प्रोसेस हमारे आयुर्वेद में चलता है. और हम लोग, जो मेरा लास्ट स्टेटमेंट है कि हम दूसरे की विद्या और बुद्धि को काम में ले सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. मीन्स the modern skills, modern knowledge and modern tools can be utilized for our drug designing and development process. But कभी भी दूसरे की ज्ञान हमारे खुद के ज्ञान को अगर कलुषित कर देता है तो वो हमारे लिए कभी हितकारी नहीं होता है. बिकॉज हमारी हार तब होता है कि जब हम उनके जैसे बन जाते हैं. हमारी जीत तब तक है जब तक हम उनके ज्ञान और उनकी कौशल की सहायता से हमारी ज्ञान और कौशलता को बढ़ाएंगे, तब तक हमारी जीत है. जब हम उनके जैसे बन गए तो ये हमारी हार है, ऐसा मेरा मानना है. Thank you for giving me an opportunity to place my opinion before us. अगर कोई क्वेश्चन है then I will be happy to answer. Thank you so much, sir, for such an elaborate review. I now request all the participants to put up their queries. The forum is open for discussion. If anyone has any query. आज लग रहा है किसी को समझ में कुछ नहीं आया. नहीं सर, हो सकता है आपने इतना अच्छा समझाया हो कि किसी को कोई क्वेरी ना रही हो. या डॉक्टर क्रांति प्लीज. Organizers, please unmute Dr. Kranti. Dr. Rachna Bharadwaj, ma'am, please ask your query. Please unmute yourself and ask your query. Hello, good evening, sir. Hello. Yes, ma'am, please. सर, मेरी क्वेरी मात्रा को लेकर है कि जिस तरह से काल चेंज होने के कारण जो प्राणी का बल है वो रिड्यूस होता है, तो मात्रा हम लोग अकॉर्डिंगली उसके एडजस्ट करते हैं कि जैसे पहले जितने मात्रा में च्यवनप्राश दिया जाता था, आजकल उतनी मात्रा में च्यवनप्राश नहीं दिया जाता है.
ये बोल के कि उतना डाइजेस्ट नहीं होगा करके, बट औषध बल भी तो रिड्यूस होता है ना सर। प्राणी बल अगर रिड्यूस हुआ है तो औषध बल भी रिड्यूस हुआ है। मोर ओवर जैसे पेस्टिसाइडल रेजिड्यू वगैरह जो जो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं ड्रग के, वो भी डिमिनिश हुए हैं। तो उस पे आपका क्या वो रहेगा सर सजेशन? मैम, आप रचना जी, आप क्या करते हैं? सर मैं एमडी स्टूडेंट हूँ, फाइनल कहाँ ईयर। जी, कहाँ पे? दयानंद आयुर्वेदिक कॉलेज जालंधर। अच्छा, आप मैं क्योंकि ये फिजिकल क्लास होता है ना, तो इसमें मजे आते हैं, नहीं तो ये तो आप पहचान दिख नहीं रहे। तो आपको क्या लगता है, ये जो आयुर्वेद का पूरा ज्ञान आया है, ये किस प्रकार से आया है? कुछ लोग तपस्या करके लिख के भेज दिया, या किस मेथड से इवॉल्व हुआ है? आपको क्या लगता मुझे तो ये लगता है सर कि मतलब हिट एंड ट्रायल हुआ हो, जैसे संधाय है? संभाष रहे हैं कि कुछ ने पहले कहा था कि नहीं एक रस होता है, फिर 2 रस होते हैं, फिर फर्दर मतलब उस तरह से एक इवॉल्व हुआ है ज्ञान। इट्स नॉट जस्ट कि समवेयर एक दिन कोई जागा और समथिंग हैज हैपेंड। तो मैम, आपको जो लगता है ना, उसके पीछे मुझे शास्त्रीय आधार दो, कि आप किस आधार पर बोल रहे हो कि आपको ऐसा लगता है कि हिट एंड ट्रायल हुआ है। सब कुछ ना ये शास्त्र में लिखा है, आप मतलब हमें पता होना चाहिए। सर आप जैसे मुझे एग्जैक्टली शायद भेल संहिता में भी ये चीज दिया गया है कि जैसे पंजाब के प्रांत के जो लोग होते हैं हम्म, उनको ज्यादा मतलब अर्श रोग के लिए वो ज्यादा प्रोन होते हैं, तो हम्म, वो बिना ऑब्जर्वेशन के पॉसिबल नहीं हो सकता था। कोई तो आप अगर ऑब्जर्वेशन। चरक की बात कला के लिए अध्याय देखेंगे ना, जहाँ जी मैत्रेय ने प्रश्न किया था, जी तो वहां कंक्लूड करते हुए आत्रेय लिखता है कि इदम प्रत्यक्षम, कि हमने इसको करके देखा है। वो उसी को लिखा है, हमको बहुत कुछ सुनाया गया होगा, हम सबको माने नहीं है। सो दिस इज ए नॉलेज सिस्टम दैट हैज बीन एक्चुअली इवॉल्व आउट ऑफ रिपीटेड एक्सपेरिमेंटेशन। ठीक है, तो यस उन्होंने उस समय तक जो एक्सपेरिमेंटेशन की उनको जिस्ट मिला है, उसको लिखा है। ठीक है, और इसीलिए वो ओपन रहा है कि आपको आगे इससे अलग मिल सकता है, देन यू हैव टू यूज योर रैशनैलिटी एंड यू कैन मॉडिफाई योरसेल्फ। तो जी सर। जैसे च्यवनप्राश को अभी हमने अपने हिसाब से ऑब्जर्व किया है कि लोगों को अगर 2 पल च्यवनप्राश खिलाएंगे तो वो हजम नहीं कर पा रहे। वी हैव टू आल्सो एक्सेप्ट दैट पीपल हैव ऑब्जर्व दैट इट इज नॉट गोइंग टू थेरापेटिकली फिजिबल कि आप इनको खिला रहे। लेकिन ये बात सही है, रिसर्च कुछ कुछ हमारे उस ऑब्जेक्टिव को अचीव नहीं कर पाए। ये इवन मैं पर्सनली भी एक्सपीरियंस किया हूँ। लोग ट्रायल करते हैं 5 ग्राम चूर्ण सुबह शाम लेके, या 3 ग्राम चूर्ण सुबह शाम लेके, और उसके बाद बोलते हैं कि रिजल्ट आया नहीं। बट नोबडी एक्चुअली टुक पेन टू सी कि ये 6 ग्राम्स अगर ट्वाइस ए डे देते, रिजल्ट दे रहा है कि नहीं दे रहा है। ठीक है, तो जी इस तरह से और औषध की जो आप बोल रहे कि भेषज की बल भी परिवर्तन होता है, ये सब चीजें काल के अनुसार तो हो गए। देन ये काल के जो विद्वान है, उन्हीं के ऊपर अपेक्षा रहता है कि वो उस हिसाब से क्या बोलते ज्ञान को कालानुरूपी करेंगे। हम कितना कर पा रहे हैं वो हमारे ऊपर है। आई बात। अब मुझे लगता है कि इसलिए मैं भी पोजीशन में नहीं हूं कि आपको आंसर कर दूं कि हर चीज की कालानुसार क्या क्या हो गया है। ऐसे देखा जाए तो कुछ प्रैक्टिकली दिखता है कि जो जनपद ध्वंस में बोलता है कि पादांश से सब क्षय हो रहा है, और महाभूतों की गुणों में भी क्षय हो रहा है, और हमारे हर द्रव्य महाभौतिक है। तो जी महाभौतिक है तो उनकी कहीं ना कहीं माल क्वालिटेटिव जो है वो डिग्रेडेशन तो होगा रिडक्शन। ही ना। और जी हमको प्रैक्टिकली दिखता है, जो चीनी पहले जितना मीठा लगता था वो अभी इतना मीठा नहीं लग रहा है। तो उस हिसाब जी से डोज बढ़ना चाहिए या घटना चाहिए, उसके ऊपर हम लोगों की ट्रायल होना चाहिए। और हम उस तरह की ट्रायल अभी बहुत कम हो रहा है, इसीलिए मैं भी आपके जैसे हैंडीकैप को कुछ आंसर ही नहीं कर सकता। मैं तो सिर्फ सर जैसे प्रश्न। हैबिटेट डिस्ट्रक्शन भी हो रहा है प्लांट्स का, ग्लोबल वार्मिंग करके, जैसे अतिविषा का भी कितना हैबिटेट डिस्ट्रक्शन हुआ है। तो उस चीज की वजह से भी मतलब जो अपने एरिया में ग्रो हो रहा है प्लांट, और जो अंडर स्ट्रेस थोड़ा मतलब कुछ ज्यादा ही अंडर स्ट्रेस ग्रो हो रहा है, तो वो भी मतलब थोड़ा फर्क डाल देता है ना सर।
जी जी, ये सब एक्चुअली दीज आर ऑल एवेन्यूज फॉर न्यू रिसर्च, इसमें करने की बात आ जाती है, क्योंकि जो आयुर्वेद का वैद्य की कॉन्सेप्ट था वो बेसिकली एक नेबरहुड फिजिशियन था, कि उस एरिया में जो रिसोर्सेस मिल रहा है उससे लोगों की स्वास्थ्य की देखभाल करेगा। हाँ, और रेयर कंडीशन में ही वो बाहर से कुछ सब्सटेंसेस यूज करेगा, इस तरह का हमें कॉन्सेप्ट दिया गया था। इसीलिए जी वो बोल रहा था कि जो योग है वो राजाओं के लिए है, और बाकी जो है लोगों को तो कॉमनली अवेलेबल जो आपकी जड़ी बूटी है उससे उसको काम चल सकता है। हाँ, जी अब सर। इसलिए जो मिल नहीं रहा है उसके बदले हमें कुछ को लेना तो पड़ेगा ही। अतिविषा के लिए कुछ कुछ काम हुआ है कि अतिविषा और मुस्ता दोनों की अग्र में फलश्रुति एक है। तो जब ट्रायल किया जाता है तो दिखता है कि अतिविषा जितना काम करता है जी लगभग उतना फार्माकोडायनेमिक एक्टिविटी आपकी मुस्ता में दिखता है। बट अतिविषा व्हाई इट इज बेटर, जो उसके दुष्प्रभाव है, और जो आप लोगों को मतलब जैसे बाल रोगियों में आप अतिविषा को दे सकते, मुस्ता को इतना इजीली आप नहीं दे सकते, फ्रीली नहीं दे सकते, इसीलिए उन्होंने अतिविषा को मुस्ता से ऊपर रखा है। लेकिन अगर अतिविषा नहीं मिल रहा है तो 60 to 70% पर्सन में हम मुस्ता से काम ले सकते। ये चीजें तो वही है, ड्रग डिस्कवरी में यही काम में आता है। थैंक यू। जी जी। थैंक यू सर। Now, Dr. Kranti, I sent you a request. Please unmute yourself. Sir, good evening, sir. हाँ, या गुड इवनिंग सर। Sir, it was a fantastic session, sir. Actually, इतना सारा अभी तक कोई हमको ज्ञान नहीं दिया। So, and finally, you made us believe that new drug discovery से अच्छा है कि old drug को हम लोग पहले ठीक से understand कर सके। And the parameters that you have told, right, sir? Like Gurvadi Gun, Yogi Panchagun, Panch Mahabhut, and all the other parameters, drug discovery, उसका जो भी प्रोसेस है, एलोपैथी में जो 10 साल ले रहे हैं ना सर, ये ड्रग को हम रियली रीडिस्कवर करने के लिए 100 साल लगेगा शायद। और मैं लास्टली आप जो बोले उसको मैं एक एक्रोनिम में बदल दिया हूँ सर। ड्रग बोले तो DRUG, D stands for do, R stands for research, U stands for utilize, and be grateful for the drugs you are already gifted to by the acharyas. इसका मतलब है जो हम हमारा पुराना जो सूत्र बोला गया है, जो पुराना हमारा मेडिसिन बोला गया है, उसको हम लोग ठीक से नो कर सके तो ठीक से मालूम कर सके तो वही ग्रेट ड्रग डिस्कवरी है सर। एंड इट्स ए फैंटाबुलस लेक्चर फ्रॉम योर साइड सर। तो मैं क्वेश्चन पूछने नहीं आया सर, आपको थैंक यू देने के लिए आया हूँ। थैंक यू सो मच सर। अरे, when once you are there and you listen for 1.5 hours or 1 hour 45 minutes, and still you have something to say, means it's a big thank you. थैंक यू सर। I agree with you that बेटे को समझने के लिए पहले बाप को समझना पड़ता है। इसलिए वंश की बात चलता है ना, कि इसके वंश में क्या चल रहा था तो ये ऐसे ही करेगा। और हमें वंश का पता नहीं, हम नया नया बेटा पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, कर सकते हैं। करने के लिए चरक के जैसे लिखने के लिए चरक तो बनना पड़ेगा ना। चरक और कोई नहीं बन सकता सर। वो तो है, नहीं वो तो है। नहीं बन सकते हैं, कोई भी बन सकता है, पर वो वहां जाए तब बने ना। अब वात सामक द्रव्य मतलब इफ आड वात विध्वंसिनी वात गजांकुश वात चिंतामणि एंड थिंक दैट इट इज गोइंग टू वर्क, इट इज नॉट सम concept दैट आयुर्वेद ऑपरेट्स अपॉन। ये मेरा खुद का मानना है कि ये हम लोगों की सोच ही नहीं था कब, कि हम 4-5 द्रव्य मिला देंगे तो बढ़िया हो जाएगा, ऐसा नहीं है। इसलिए पर ठीक है, कमर्शलाइजेशन एक अलग चीज होता है और ट्रीटमेंट एक अलग चीज होता है। Now, या प्लीज। Sir Hari Krishna, I sent you a request. Please unmute yourself and ask your query.
Mr. Hari Krishna, unmute yourself. Hari gaya. Hello. Hello. Yes, yes, audible. Good evening, sir. Thanks for a nice presentation. Just one doubt, sir. When we present a drug formulation to people, they ask for some study reports like HPTLC. They ask for molecular docking. That's what is recently used. But is it conclusive, sir? Are these conclusive about a drug's validity? I mean, credibility of a drug formulation? No, no. You cannot. It's a middle thing. We cannot just discard everything, and we can't also accept everything. Most of the chemical parameters that are now used as a quality parameter, if you go to text, it follows the principle of साहचर्य उपचारता. मतलब जो है कि हमेशा ऐसा दिखता है, इसलिए इसको हम अच्छा मानते हैं. I hope you got my point. Means Okay. it's not that it doesn't scientifically explain because this is there, it is working. It is more like whenever it is working, this thing is seen. So that's why we can accept this as a quality parameter. Most of the chemical parameters are like that. And molecular docking, as far as my knowledge goes, it is not possible in Ayurvedic multi-ingredient formulation, because I do not know what molecule is actually working. Okay, so there are so many molecules, so many compounds in an Ayurvedic formulation. Then it is not means broad biomarkers are being used nowadays. But as you, this Dr. Kranti was telling, it's more like making people happy than actually making yourself happy to understand that everybody accept. That's why I'm doing it. Like this HPTLC fingerprint, or you say biomarkers, what they're telling. No, I have come across researches where HPTLC marking failed for samples, but they did give me clinical and experimental result in animals. So that exposed my knowledge that I had missed something, that it is not only the chemistry that is working, there are certain other things that is working. And basically, you see, because I don't know if this is a correct forum or not, Ayurveda is a much more difficult science to study than allopathic medicine. Because if you see allopathic medicine, I give an example that one person is playing with 2 balls, it is easy to play. But Ayurvedic medicine, it means you are playing with 50 balls at a single time. So you must have that skill and that much of knowledge to actually play with that. So that's why we need time, we need mental stability, and we also need to stay within our conceptual framework first. अगर हम अपने ही चीज को नहीं समझ पा रहे, दूसरे को ले रहे, तो अभी दिक्कत क्या है कि हम कल मीन्स करप्ट हो जाते हैं माइंड से, ना हम उनका समझ पाते हैं ना हमारा समझ पाते हैं. और इस चीज को आजकल क्योंकि अभी इस चीज को जो रियल रिसर्चेस में है ना, वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि यू कैन सी द वर्ल्ड इन डिफरेंट वेज. जो आप देख रहे हैं वो सही है जरूरी नहीं है. एक ही चीज को समझने की और बताने की तरीका अलग से हो सकता है, आउटपुट एक ही हो सकता है. तो मैं अपना काम कर रहा हूँ, मैं अपने हिसाब से समझा रहा हूँ, वो प्लाज्मा ग्लूकोज में डायबिटीज मिलेटस को समझा रहा है, मुझे इसमें वृक्ष गुण से समझ में आ रहा है, मैं उससे समझा रहा हूँ. एंड दिस इज ए रिसर्चर्स अब तो एक्सेप्ट करने लगे हैं कि ये चीज को प्लूरलिस्टिक हेल्थ अंडरस्टैंडिंग के कॉन्सेप्ट से बोलते हैं कि हरि कृष्णा जी जो है ना, वो 5 तरीके से बैंगलोर से दिल्ली जा सकते हैं ना, तो जरूरी थोड़ी किसी फ्लाइट में जाएंगे. तो अगर मुझे आप बोलोगे फ्लाइट में तो गए ही नहीं, तो कैसे दिल्ली गया, तो वो ट्रेन से भी जा सकते हैं ना. मैंने ट्रेन से वाला समझाया आपको. तो इस तरह से बाकी जो केमिकल पैरामीटर से क्वालिटी कंट्रोल के लिए, इट इज वी कैनॉट डिस्कार्ड दैट, but we cannot also say that once it is quality passed, it is going to therapeutically active. And similarly, if it is not passed as per those quality control parameter, it may not act. It is also not true. सभी की evidences आ रहे दोनों साइड की.
बट ये है कि आप जो आयुर्वेद है वो उसका इवोल्यूशन हुआ था कि ये भूत मात्र दया के लिए हुआ था, तो वेलफेयर वाज आवर टारगेट। अभी जो चल रहा है वो कॉमर्स सेंट्रिक चल रहा है। कॉमर्स सेंट्रिक चलने के लिए आपको प्रोडक्ट बेचना पड़ेगा, ठीक है। और जो वैद्य था उसका ये ऑब्जेक्टिव था कि कोई भी रोगी जो है हमारे पास ना आए, हमें उस तरह की कोशिश करना चाहिए। उसको बताएंगे सुबह जगो, वसंत ऋतु आया तो वमन कर लो, ये कर लो, ताकि तुम रोगी ना बनो। तो लेकिन अगर मुझे च्यवनप्राश बेचना है तो मुझे ये तो उसको बताना नहीं है ना कि तू अगर इसको खा, ये काम कर लेगा तुझे सर्दी जुकाम नहीं होगा, तुझे च्यवनप्राश खाने की जरूरत नहीं। तो ये कॉमर्स करने के लिए फिर रेगुलेशन की जरूरत है। रेगुलेशन होगा तो कुछ ना कुछ तो पैरामीटर्स डेवलप तो करना पड़ेगा। तो अ, अभी जो भी पैरामीटर्स है वो अप टू क्वालिटी एश्योरेंस तो एक्सेप्टेबल है, बट दे डू नॉट इन नो वे एक्सप्लेन द थेरापेटिक एक्टिविटी और फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी, ये तो है ही नहीं। थैंक यू। Okay. Thank you, sir. Thank you for your very knowledgeable and interactive session. I hope that all questions will be answered. If there is remaining any query, you can mail us. Thank you. Now over to Dr. Rashmi ma'am. Please, ma'am. Thank you so much. The chairperson for today's session, Professor A. Ramamurthy sir, due to some technical issue, he is not able to join us today and he has expressed his deep regret for this. So we will conclude this session. Thank you so much, sir, for such an elaborate review, and thank you all the participants. Thank you. Thank you, Dr. Rashmi ma'am. Now, on behalf of the Institute of Applied Statistics, we convey our sincere thanks Moini, all. hello. Please wait Yes. for the chairperson to conclude the session. Okay, okay. He is not available due to some technical error. He is not able to join us today. Okay. Yeah, Very sorry. that's why I have concluded the session on my part. Okay, Yes. okay. Miss Moini, please proceed. Okay, sir. We convey our sincere thanks to all participants for their active participation during the session. We heartily thanks today's resource person, Dr. Sudipt Rath, sir, for a very interactive session. And also thanks for Professor A.R. Ram Murthy, sir. Thank you. Now, this is the end of today's session. Again, thanks to everyone. Thank you. Thank you, sir.